Let me quickly cut across. Here, Yogi Adityanath, UP Chief Minister, has just arrived. In fact, Yogi Adityanath has arrived in Prayagraj. Chief Minister Yogi has condoled the death and also said adequate investigation will be carried out to see the reason behind the seer's death. Here, we're looking at a very revered seer who's died by suicide. Of course, politics erupting over the seer's death. We're looking at Narendra Giri, who was found hanging in Prayagraj. In fact, an FIR quickly was registered as well against his disciple Anand Giri, whose name, in fact, Giri was named by the note left behind by the seer. In fact, a suicide note was left behind as well. We're looking at Yogi Adityanath, who's just arrived. There is speculation that the seer could have been blackmailed by an SP leader. Of course, no clarity on that as yet. But here's a speculation that's now doing the rounds, that an SP leader could have been behind pushing the seer to the edge. Here we have Yogi Adityanath, who's just arrived to take a look at. In fact, he's at the seer's house. It's unfortunate, it's quite a shock that the very revered seer, Narendra Giri, has died by suicide. Here's Yogi Adityanath, who's just arrived to take a look. We are looking at Anand Giri, who's now been arrested by cops. In fact, his name was mentioned in the suicide note as well, but nonetheless, no confirmation on what exactly prompted the revered seer to take his life. Let me quickly cut across to Samarth joining us live for more details on that. Samarth, who's right there at the spot. Samarth, if you can tell us what exactly is happening. We see Yogi Adityanath, who's just arrived. He's having a conversation with the other seers who are present there. This has come as a massive shocker. A revered seer who's really spoken extensively in favor of the BJP, has been actively involved in people's lives, in social life. He has been quite a vocal voice in support of the BJP all along. And the man who has the kind of following has been believed to be a really popular seer, has the support of people around him. For him to be taking his life, an absolute shocker. Do take us through exactly what kind of probe the Yogi Adityanath government wants to be initiating here. Well, I am present at the particular month of Prayagraj where the entire thing is happening. As I want to show you the visuals behind that preparations are being made, and as you can see, a large number of media persons have already been present here. As CM Yogi Adityanath has already reached the mutt, and in some time he is going to address the media about his views, about his thoughts regarding the demise of Mahant Narendra Giri, the chief of Apex of Akhada Parishad. And as you see the visuals out, the police personnel are stationed in large numbers. Police barricades are being put, tents have been set up, and in these premises you may see Keshav Maurya, the Deputy CM, UP Law Minister Brijesh Pathak, and now CM Yogi Adityanath has already reached this particular spot. And what we are getting, UP Law Minister Brijesh Pathak, while speaking to India Today, clearly said that culprits will not be spared. And now you can see the preparations are on for the address of CM Yogi Adityanath. And in next 5 to 10 minutes, you may see CM Yogi Adityanath addressing the media regarding the demise, and he is likely to speak on the suicide letter, on the culprits, on the names mentioned in the suicide letter, and what we got through police sources or by the disciples of Mahant, that the letter was written by Mahant Narendra Giri himself, which clearly says that yes, there was a role of 3 disciples, including the 2 of Hanuman Temple and 1 of this particular mutt who is coming from Haridwar with UP police. But what I am showing you are the visuals out here that preparations are being made for the speech, for the address of CM Yogi Adityanath, and in a while he is going to address. And it is
it has came as a major shocker, as you said, because he was one of the top Mahants. He was the chief of Apex Akhada Parishad of India. So that is why it is very sensitive and it is very important for entire India. That is why Prime Minister Narendra Modi, CM Yogi Adityanath, SP Chief Akhilesh Yadav, every prominent leader conveyed their condolences, and you can see that the crowd outside this particular gate of mud, it is increasing with every minute passing. So this is the impact of Mahant in Prayagraj, in the Sangam city. He left behind his memories. What else? Well, let me do stay with us, Samarth. Let me cut across to Keshav Maurya, who's reacted on the Mahant Narendra Giri's suicide. It has absolutely shocked UP, and we see Yogi Adityanath present. Let's take a listen as reactions pouring in. सारे विषय सबके संज्ञान में हैं। साजिश नहीं होती तो महाराज जी फांसी नहीं लगाते, और यह हमारे लिए बहुत दुखदाई है, बहुत पीड़ाजनक है। और कोई भी जांच, जो सवाल आप सब कर रहे हैं, कोई भी जांच के लिए सरकार तैयार है। All right, I'm going to cut back to Samarth, who's been tracking those developments. Samarth, we see Yogi Adityanath, who himself is the Mahant of Gorakhpur. He's currently right there. He's speaking, interacting with the other sayers, trying to understand what may have really gone wrong to have pushed Mahant Narendra Giri to commit suicide. Do take us through the sequence of events. When did this event come to light, and what exactly is mentioned in that suicide note? Does it smell of a conspiracy? बंद कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। Well, I'm going to try and patch Samarth there. Here is Yogi Adityanath, who's just arrived. He himself is a Mahant of Gorakhpur temple. He's reached Prayagraj to pay homage to the late Akhanda Parishad head Narendra Giri. Remember, Mahant Narendra Giri is a revered seer. He has been, like I did mention, a vocal supporter of the BJP, has been a man who's always backed Yogi Adityanath. In fact, it's quite shocking for him to be taking his life. Conspiracy is what is being accused and alleged by people around who know him quite well. In fact, investigations further has been initiated by the Yogi Adityanath government. They've promised and assured to find, if at all, anyone guilty of this will be arrested. A day after Akhada Parishad head Narendra Giri was found hanging in Prayagraj, an FIR has also been registered against his disciple Anand Giri. Anand Giri was named by the noted seer here in his purported suicide note as the one who subjected him to mental torture. In fact, Anand Giri has been arrested and booked for abatement to suicide. The main priest of Prayagraj's Hanuman Mandir, Adhya Tiwari, and his son Sandeep Tiwari, who were also mentioned in the suicide note, have also been arrested. Now, the FIR mentions that the seer was troubled by Anand Giri and that their relation remained strained even after reconciliation in May. Prayagraj police says that the accused are being questioned and all angles are currently being probed. Cops are also examining CCTV footage from the cameras placed just outside the room where Narendra Giri was found hanging. Now, sources say that Narendra Giri was being blackmailed through a video and that an SP leader who was a minister during Akhilesh government is also under scanner. Crucially, a disciple of Narendra Giri has claimed that the seer had also recorded a video before his death, the contents of which are similar to what is really mentioned in the suicide note. Another disciple denied Anand Giri's claims that the seer couldn't write, saying that he had written many letters. In fact, he also claimed that the seer had asked for a rope just 2 days ago. Here you see visuals coming in, live visuals that we continue to track of Yogi Adityanath, who is present at the seer's residence. Right now, what we hear is that a CCTV cameras, the footage of which is now being probed, the CCTV cameras that were placed right outside Narendra Giri's room where he was found hanging, that's also now being investigated. In fact, the FIR has now mentioned that the seer was troubled by Anand Giri and that their relation remained strained even after reconciliation. So Anand Giri, along with 2 others currently who have been named in that suicide note, have been taken in for questioning. Let's take a listen. Reactions coming in on the same.
बड़ी बात है कि महाराज जी ने अपने जाने से पहले लिखा तो है ही है, एक वीडियो भी बनाया है अपने फ़ोन में, और वो फ़ोन अभी प्रशासन के कब्जे में है। वो वीडियो जब आएगा सभी के बीच में तो सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। वो कैसा वीडियो है? वो शायद मैंने सुना तो नहीं, बस देखा है उसको कि वीडियो बना है, और वो वीडियो शायद वही है जो उन्होंने लिखा है। तो शायद वो समझ रहे होंगे कि मेरे न रहने के पे ये भी सवाल उठाया जा सकता है, तो उन्होंने बोल के भी ये बात कही है शायद। आपने फंदे से उतारा था महाराज जी के जी शव को? जी, सबसे पहले आपने ही दरवाजा खोला था? हम और सुमित और धनंजय 3 लोग अंदर, जब दरवाजे को धक्का दिए तो 3 लोग अंदर गए, तो महाराज को लटकता हुआ देखा, सुमित उनको पकड़ लिया, फिर हम चाकू मंगा के। दरवाजे को धक्का दिया गया, ये दरवाजे को तोड़ा गया? ये दरवाजा जैसे है हमारे पीछे, ऐसे दरवाजा था। अच्छा। इसी दरवाजे को आगे से खींच करके, जाली जब खींचा गया तो कुंडी निकल गई, अब तेज से धक्का दिया गया तो ऊपर की कुंडी उनकी टूट गई। अच्छा, ऊपर की कुंडी टूट गई, फिर आप लोग अंदर दाखिल होते हैं, महाराज जी का शव लटकता हुआ आपको दिखाई देता है? जी हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चाकू मंगा करके हम लोगों ने शव को काट करके नीचे उतारा, फिर आजी प्रयागराज और थाना जाट टाउन को फोन द्वारा सूचित किया गया। पूरा का पूरा दरवाजा अंदर से बंद था? कोई भी दरवाजा अंदर जाने का कोई चांस नहीं था, दरवाजा तीनों तरफ से बंद था। तीनों तरफ से जी, दरवाजा बंद। एक लैट्रिन का है, 2 सामने का है, एक जाली वाला है, एक और दरवाजा है। आपने चूंकि सबसे पहले देखा था, तो ये बताइए क्या वास्तव में उनका जो शव लटकता हुआ मिला था, अब वो उन्होंने सुसाइड किया था या फिर उनकी हत्या की जा सकती है? सुसाइड किए थे। सुसाइड किए थे। आप लोगों की नजर में वो सुसाइड लग रहा है, कोई अंदर जाने का कोई चांस नहीं, तो ऐसे हम हत्या को कैसे नाम दें? All right, I'm going to cut across to Samarth joining us more on that. Samarth, Narendra Giri's disciples say that as soon as they opened that room, they found him hanging. They saw that quite clearly. That's what we heard from the disciple, that it looked more or less like a suicide. But what time did this happen, and was there any noise that was heard by any one of them, and how long before they actually found him dead by suicide? Well, no noise. I spoke to the disciple and he clearly told India Today that it all happened as after having lunch at around 11:30 a.m. he went to sleep at around 12 p.m. and then he used to come outside his room around 4 p.m. but when he did not come, disciples reached his place, his room in the guest house around 5 p.m. and with no noise coming after reciting his name, they broke open the door and went inside to see that their Mahant was hanging with the rope. And what we are getting out, that CM Yogi Adityanath is arriving at this particular place and he's going to address media in few minutes. So already Keshav Maurya, UP Deputy CM is there, UP Law Minister Brajesh Pathak is there, Rita Bahuguna Joshi, BJP MP is already there, and in few minutes we can see CM Yogi Adityanath addressing the speech. He has arrived at this particular place at the Mutt where the entire incident took place yesterday night, and as Mahant Narendra Giri died yesterday, he was found dead under mysterious circumstances, and as you can see that CM Yogi Adityanath has arrived at this place and is going to address. His address is going to be important, as before him Keshav Prasad Maurya and Brajesh Pathak has already gave clear indications that culprits won't be spared, as whosoever is involved. All right, Samarth, do stay with us. Yogi Adityanath is now addressing a press conference. He's going to be speaking on this case. भैया शांत रहो, कोई बात नहीं करेगा। मुझे फ्रेम नहीं दिख रहा। ओके, एक मिनट, शांत हो जाइए प्लीज। मेरी बोलिए। मित्रों, शांत रहो। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष इस प्रतिष्ठित बागंबरी पीठ के श्री महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज के दुखद घटना से हम सब व्यथित हैं।
एक दुखद घटना है और इसीलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की एक अपूरणीय क्षति है। अखाड़ा परिषद और संत समाज की जो सेवा उन्होंने की है वह अविस्मरणीय है। मुझे याद है प्रयागराज कुंभ 2019 में जिसे वैश्विक मंच पर मान्यता मिली, इस कुंभ से जुड़ी हुई एक एक घटना को आम जनमानस और श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप कैसे हम वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करें, इसके लिए उनका हर प्रकार का सहयोग हमें प्रयागराज कुंभ को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने के लिए हमें प्राप्त हुआ था। मैं उस समय देखता था कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के बावजूद, क्योंकि साधु समाज के बीच में कार्य करने का एक लंबा हम लोगों का सहयोग था, तो मैं इस चीज़ को देखता था कि मान अपमान की चिंता किए बगैर प्रयागराज कुंभ को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था। प्रयागराज कुंभ के पूर्व संगम पूजन और मां गंगा की पूजा के कार्यक्रम को यहां पर आयोजित हो, उनकी इच्छा थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर इस कार्यक्रम को लेकर के प्रयागराज पधारें तो इससे काफ़ी चीज़ें हमारे लिए और भी अच्छे ढंग से इसे प्रस्तुत करने का एक अवसर प्राप्त होगा। और प्रयागराज कुंभ के पूर्व जब प्रयागराज से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के यहाँ के भौतिक विकास से जुड़े हुए कार्यक्रमों का लोकार्पण और शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रयागराज आगमन हुआ था, तो उन्होंने उस मुहूर्त को उसी के साथ जोड़ा था। पूरा अनुशासन, पूरी मर्यादा, पूरी पवित्रता को बनाए रखते हुए उन्होंने हर एक उस आयोजन में कैसे बेहतर समन्वय और संवाद के माध्यम से हम जैसे अपने घर का कोई कार्य होता है उसी तर्ज पर प्रयागराज कुंभ की भव्यता, उसकी सुरक्षा, हर एक श्रद्धालु की व्यवस्था, 13 अखाड़ों के बीच में परस्पर संवाद और समन्वय, हर एक पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए आचार्य धर्माचार्यों के बीच में बेहतर संवाद और सम्मान, इन सब को लेकर के उन्होंने बहुत जो सुंदर प्रयास किया था, उसका परिणाम था कि प्रयागराज कुंभ पहली बार वैश्विक मंच पर एक अद्भुत घटना के रूप में जाना जाता है, जो अपनी सुव्यवस्था, सुरक्षा, यहाँ पर स्वच्छता के नए मानक वहाँ पर स्थापित किया था।
मैं देखता था साधु समाज की समस्या को लेकर के, धर्माचार्यों की समस्या हो, अखाड़ा के अंदर का हो, अखाड़ा परिषद के अंदर का हो, किसी मठ मंदिर का हो, या फिर अखिल भारतीय स्तर पर समाज और देश के हित में किए जाने वाले हर एक निर्णय में उनका सानिध्य और सहयोग प्राप्त होता था। आज वे हमारे बीच में नहीं है। उनका दुखद अवसान हम सब के लिए, खासतौर पर धार्मिक जगत के लिए, आध्यात्मिक जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रभु श्री राम से, प्रयागराज से और यहाँ पर साधु समाज की जो उन्होंने सेवा की है, उन सभी पितरों से भी यही प्रार्थना करूंगा कि उन्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति हो और वह जिन कार्यक्रमों को लेकर के चले थे, अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए, साधु समाज से जुड़े हुए, बागंबरी पीठ से जुड़े हुए, इन सब की पूर्ति और इन्हें सकुशल आगे बढ़ाने के लिए इतनी ताकत उनके सभी सहयोगियों, अनुयायियों और उनके शिष्यों को प्राप्त हो। यहाँ की कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों, और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। मेरी विनम्र अपील होगी सभी लोगों से कि संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचें, जांच एजेंसियों को निष्पक्ष ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दें और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको कानून के दायरे में ला करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। धार्मिक परंपरा के अनुसार पंचक होने के कारण उनके शिष्यों और अनुयायियों और अखाड़ा से जुड़े हुए पदाधिकारियों की राय है कि कल आज जनता के दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर बागंबरी पीठ पे ही रहेगा। कल 5 सदस्यीय एक टीम उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम की कार्रवाई को संपन्न करेगा और उसके उपरांत जो भी धार्मिक रीति है, शास्त्रोक्त पद्धति से उनकी भावनाओं के अनुरूप समाधि का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न होगा। सभी एजेंसियां अलर्ट हैं और इस पूरे मामले में हर व्यक्ति आहत है, व्यथित है। मैं एक बार फिर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। प्रदेश सरकार की ओर से, अपने धार्मिक समाज की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करता हूं कि वह ब्रह्मलीन
महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज को अपने श्री चरणों में स्थान दें। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, क्या अभी आवश्यकता है उसकी? UP Chief Minister Yogi Adityanath promises to punish the culprits. He says investigation is currently underway. They are looking at all angles. If at all the seer was almost pushed to the edge to commit suicide, was he being blackmailed by anyone? Who are those people, in fact, who's been named in that suicide note? Is it a legit suicide note? These are the angles that will be probed. Yogi Adityanath assures, while he also, of course, remembers the seer for all the activities, the social work that he did through the years, to say that he was a top seer, a revered seer who's extensively worked for social causes. In fact, he promises now, if there is any conspiracy that is in this case, he will ensure that the culprits will be brought to book. Let me cut across to Samarth, who's right there at the spot, who's tracking those developments. Samarth, Yogi Adityanath, who's right there, has promised that the culprits will be punished if there is a conspiracy behind this suicide. Well, exactly, conspiracy behind his suicide is the major issue in this particular incident, and that is why ministers or Yogi Adityanath are very adamant about this entire incident. Yogi Adityanath was just addressing media, and he clearly said that it is a major loss not just for the seas but for entire nation. And as he clearly mentioned, that post-mortem will take place tomorrow, and for today the body will remain here for the final look of this, for the followers, for the disciples, and tomorrow the post-mortem will take place, and after which the process of Samadhi will begin, as Akhada Parishad members will have almost arrived at this place, and that is why this final decision has been taken place. As what we got to yesterday, police claimed that post-mortem will take place today, but after the discussion with the Akhada Parishad members, it has been decided that post-mortem will take place tomorrow, while the Samadhi process will also take place tomorrow. So you can see that now, you can see the members are coming in large numbers, the followers, the disciples are coming from the gate of the Mutt in large numbers to witness, to see the Mahant, to see the chief of Akhada Parishad, to get his scenes. Like these are some rich visuals coming in, that after the gate was opened by police for some time, large number of followers entered inside this Mutt to take the final look, to take the blessings of Mahant Narendra Giri. Though the suicide is getting mysterious, as there are names of his disciples, the three major disciples who might be involved in this particular incident, and that is why FIR has already been registered, right, and they are booked with the section of abatement to suicide. So yes, this is a mysterious thing happening, and what update we are getting from here, that the post-mortem will take place tomorrow and the body will remain here for today. Yes. Okay, all right. Do stay with us, Samarth. We are going to continue tracking these developments. Now we know Narendra Giri's close aide and fellow seer, in fact he was his disciple, has now been arrested. He is being questioned by the police, and Yogi Adityanath has assured that they will ensure that the culprits will be brought to book, if at all there is a conspiracy behind this death. वरिष्ठ अधिकारी मौके पर हैं और विवेचना पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जा रही है, और विवेचक इस संबंध में अब किनकी गिरफ्तारी होनी है और किस एविडेंस के आधार पर होनी है, ये डिसीजन लेंगे। आनंद गिरी को कल ही हिरासत में वहाँ कस्टडी में लिया गया था, और वो उसको एक यहाँ लाया जा रहा प्रयागराज में दोपहर बाद तक पहुँचने की उम्मीद है, और विवेचना के दौरान सभी पहलुओं पे जो तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं उन पर विचार किया जाएगा और तब आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें चूँकि जो अरेस्ट कल हुए थे या जो आज एक और FIR इसमें हुई है अभी तक फर्दर, तो आप लोग को क्या लग रहा है केस कंक्लूजन पे जा रहे हैं? क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें आ रही हैं कि उन्होंने सुसाइड किया या उनका मर्डर हुआ। अभी कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं है, हिरासत में है, और विवेचक उससे पूछताछ करेंगे। पूछताछ के बाद से अगर गिरफ्तारी का पूरा आधार होगा तो आगे की कार्रवाई की जाएगी, और अन्य भी जो तथ्य उभर के आएंगे उस पर भी हम लोग पूरी तरीके से निष्पक्ष विवेचना करेंगे। फिर क्या संभावना लग रही है, जो जैसे कि कहा जा रहा है सुसाइड और मर्डर जो भी है, आपको इससे पीछे लग रहा है कि क्या कारण रहे होंगे जिसकी वजह से ये एक
घटना घटी थी? वादी मुकदमा और जो प्रथम सूचना जब आई थी तो उसके हिसाब से ये आत्महत्या का किया जाना ही बताया गया है और हम अब आगे की विवेचना कर रहे हैं। अगर कोई अदरवाइज तथ्य आएगा, इससे विपरीत कोई तथ्य आते हैं तो तत्काल अवगत कराया जाएगा। क्या लग रहा है कि जो सुसाइड नोट मिला है उसके हिसाब से कोई चीज़ें थी जो इनको परेशान कर रही थी, क्योंकि इसमें बड़े सारे नाम भी आ रहे हैं? जी। All right, that was Prashant Kumar, UP ADG Law and Order, assuring that all the angles are currently being probed and the culprits will be brought to book. 3 of them are currently in custody who are being questioned. We're going to continue tracking those details right after a short break. We'll be right back.